In the name of Allah, the most merciful and beneficent, my dear viewers, Assalamu alaikum. Today I have brought another important presentation, which is very important, significant from the examination point of view for especially BS students for their upcoming examination. And I have prepared MCQs from the poem The Scholar Gypsy, composed by Mathew Arnold. मैथ्यू आर्नल्ड की नज़म है स्कॉलर जिप्सी। उसमें से जितने भी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं उनकी मैंने एमसीक्यूज के फॉर्म में उनको यहाँ पे आपके सामने रखा है ताकि आपको एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यूज चूंकि बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर के लिए आपको आसानी हो। नज़म जो है ये नज़म मैथ्यू आर्नल्ड ने लिखी थी और 1853 में लिखी थी। ये नज़म एक बहुत पुरानी कहानी पर बेस्ड है जिसका जिक्र जोसेफ ग्लैनविल ने किया था। इस कहानी के मुताबिक ऑक्सफोर्ड का एक तालिब इल्म अपनी तालीम को छोड़कर खाना बदोशों के साथ रहने लगा ताकि वो उनके पुरासरार इल्म को जान सके, उसको सीख सके। और नज़म का जितना जो बैक सेटिंग है नज़म की, जो वो एक ऑक्सफोर्ड के इर्द गिर्द का दही इलाका है, देहाती इलाका है। असल में शायर जो है वो फितरत की खूबसूरती को जदीद दौर की बेचैनी और जहनी इंतशार के साथ उसका मवाजना करता है कि फितरत में बहुत सुकून है और फितरत में गुजारी की जिंदगी बहुत पुरसुकून है, जबकि जदीद दौर की जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वाली एज है उसके अंदर की जिंदगी जो है वो उसमें इंसान जहनी इंतशार का शिकार हो चुका है और बेसुकूनी की जिंदगी गुजार रहा है। Now, it is based on a legend mentioned by the 17th century writer Joseph Glanville about an Oxford student who left the university to live with gypsies in order to learn their mysterious knowledge. Now, starting from the very basic information about the poem Scholar Gypsy, the Scholar Gypsy was written by, first of all, we must know that it is written by Mathew Arnold. The poem was first published in, as I have told you in the introduction, सबसे पहले ये नज़म कब शाया हुई थी? 1853 में, 1853 में. The poem is based on a legend recorded by Homer, Joseph Glanville, Virgil, or Plato. Now, the poem is based on the legend recorded by Joseph Glanville. Joseph Glanville का जिक्र पोम के अंदर किया गया है, मैथ्यू आर्नल्ड ने खुद किया है और इसका नेम मेंशन्ड है पोम के अंदर। सो यू नीड टू रिमेंबर इट। ये एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको बता दूं कि पोम के अंदर जितने रेफरेंसेस होते हैं, जितने एलूजन्स होते हैं, उनको पर्टिकुलरली देखना चाहिए क्योंकि ये एमसीक्यूज के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। द लेजेंड ऑफ द स्कॉलर जिप्सी इज टेकन फ्रॉम, यानी जोसेफ ग्लैनविल का एक तो हमने लिखा कि ये जो स्टोरी है वो जोसेफ ग्लैनविल की बुक से उठाई गई है, लेकिन अब बुक का नेम क्या है? द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस, द टैटलर, द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग और लिरिकल बैलेड्स। सो आंसर सी इज करेक्ट, दैट इज द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, written by Joseph Glanville. I hope it is clear to you. जोसेफ ग्लैनविल की बुक है द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, उससे ये रेफरेंस लिया हुआ है स्कॉलर जिप्सी का। Number 5, the setting of the poem is, you must know, as it is clearly mentioned in the poem, Oxford countryside. ऑक्सफोर्ड कंट्रीसाइड, ऑक्सफोर्ड के इर्द गिर्द के जितना भी देहाती इलाका है, पोम वहां पे लिखी गई है। सेटिंग ऑफ द पोम इज ऑक्सफोर्ड कंट्रीसाइड। Now, the poem reflects which age? Romantic age, Victorian age, Augustan age, or modern age? So, the poem definitely reflects Victorian age. ये आपने याद रखना है, ये विक्टोरियन राइटर्स थे जिनमें मैथ्यू आर्नल्ड was the great critic, poet, and writer. Arnold wrote the poem as a criticism of what? Industrialization and modern unrest, medieval society, Greek civilization, war politics. So definitely option A is correct, industrialization and modern unrest. यानी वो ऑक्सफोर्ड
के इर्द गिर्द के देहाती इलाके को और फितरती खूबसूरती को और सुकून को जदीद दुनिया की ये जो सनती तरक्की और जो मॉडर्नाइजेशन आ गई है उसमें लोग जितने बेचैन हैं, लोग जितने बेसुकून हैं, उससे कंपेयर करता है. ठीक है. So his poem The Scholar Gypsy is a criticism of industrialization and modern unrest. The poem is written in blank verse, heroic couplet, elegiac stanzas, Spenserian stanza. So the correct option is elegiac stanza. Elegiac, it is actually a pastoral elegy. The poem itself is a pastoral elegy. The scholar gypsy is best described as dramatic monologue, pastoral elegy, epic, or ballad. And definitely it is pastoral elegy. The poem contains 10 stanzas, 20, 30, or 25 stanzas. So the correct option is 30 stanzas. The central theme of the poem is war and heroism, escapism and spiritual quest, political revolution, love and betrayal. And correct option is escapism and spiritual quest. यानी स्कॉलर जिप्सी जो है वो ऑक्सफोर्ड को छोड़ के, उसकी एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन को छोड़ के वो नेचर में पनाह लेता है, वो escape कर जाता है और नेचर में जाके पनाह लेता है और स्पिरिचुअल रूहानी तालीम के लिए वो तगोदो करता है. The scholar gypsy symbolizes scientific progress. The very name scholar gypsy, definitely it does not symbolize scientific progress, material success, spiritual dedication and single-minded pursuit. Yes, spiritual dedication and single-minded pursuit is the correct option. वो स्पिरिचुअली खुद को डेडिकेट करना चाहता है नेचर के लिए और एक सिंगल माइंडेड परसूट के लिए वो निकल पड़ता है. Arnold criticizes modern man for what? Being too religious, being too emotional, having divided aims and mental unrest, or loving nature. यानी modern man, ये तो being by living in the modern age or being the part of the modern age, we must know that we have divided aims, we have mental unrest. This strange disease of modern life refers to physical illness, industrial pollution, spiritual restlessness, or poverty. The strange disease of modern life, this phrase is mentioned in the poem and it means spiritual restlessness. Spiritually, रूहानी तौर पे इंसान जो है वो बेचैन है. The poem contains classical allusions to Greek mythology, Indian epics, biblical stories only, or Chinese legends. Definitely, poem includes Greek myths, Greek mythology, allusion to Greek mythology. For example, we have the example of Dido. Dido falls in love with Aeneas. ये जो है ये लिया गया है ग्रीक माइथोलॉजी से ये एग्जाम्पल उठाई गई है. So, the correct option is Greek mythology. Number 16, the reference to the Tyrian trader is an allusion to, वहां पे पोम के अंदर Tyrian trader का mention है. ये phrase ये किसकी तरफ इशारा है? रोमन सोल्जर्स की तरफ? बिल्कुल भी नहीं. Phoenician merchant, Greek god, Egyptian king. So the correct option is Phoenician merchant. आपने देखा होगा, if you have gone through the poem in detail, तो Tyrians were the people of Tyre. वो ये एंशियंट सिटी है फिनिशिया का, जिसको जो अब मॉडर्न लेबनान है, मॉडर्न जदीद लेबनान जो का ये है, उसको पुराना जो उसका नाम है लेबनान का, वो टायर था, जो कि एंशियंट सिटी था फिनिशिया का. और फिनिशिया जो है वो अब जदीद उसमें लेबनान को कहा गया था. वहां पे फेमस सी ट्रेडर्स थे मेडिटेरेनियन के. दे वर द वेरी फेमस. ये जो फिनिशियन मर्चेंट्स थे, ये लेबनान के जो ताजिर थे, वो बहुत फेमस ट्रेडर्स होते थे मेडिटेरेनियन के. तो दे वर नोन फॉर देयर पर्पल डाई. डाई से सिंबल ऑफ वेल्थ एंड लग्जरी, वो बहुत लग्जूरियस किस्म के लोग थे. तो ये रेफरेंस दिया गया है. तो टायर इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द स्टोरी ऑफ डीडो. अब आपने देखा होगा हु वॉज ओरिजिनली अ प्रिंसेस ऑफ टायर बिफोर बिकमिंग द क्वीन ऑफ कार्थेज इन वर्जिल्स एनियड. तो
टीरियन ट्रेडर जो है वो फिनिशियन मर्चेंट के लिए ये रेफरेंस है. Then number 17, the centaurs mentioned in the poem belong to. अब आपने देखा था कि सेंटोर्स जो थे दे आर द क्रीचर्स फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी, ये भी मेंशन किया गया पोम के अंदर, यानी पुराने जो ग्रीक माइथोलॉजी से ये रेफरेंस लिया गया है, जो कि इट रेफर्स टू द क्रीचर जो कि विच इज हाफ ह्यूमन एंड हाफ हॉर्स, ठीक है, जो कि आधा इंसान की शक्ल का है और आधा घोड़े की शक्ल का है, तो ये भी मेंशन किया गया है. तो इट इज डेफिनेटली इट बिलोंग्स टू ग्रीक माइथोलॉजी. Then the allusion to Ulysses connects Arnold with Ulysses, the very famous poem of Alfred Lord Tennyson. तो वो कहते हैं कि इसका कनेक्शन कहाँ है, होमरिक ट्रेडिशन से है, मेडिवल लेजेंड से है, शेक्सपियरियन ड्रामा से है या मॉडर्न फिक्शन से है. डेफिनेटली इट इज एन allusion to होमरिक ट्रेडिशन. Then the very world is an example of, यानी world is definitely it is very. सो इट इज अ ह्यूमन लाइक क्वालिटी कि ये दुनिया बहुत थक चुकी है, ये थकी हुई दुनिया है, ठीक है, तो थका हुआ तो इंसान होता है. सो वेरी वर्ल्ड है अगर, तो इट इज पर्सोनिफिकेशन. इट इज गिवन, वर्ल्ड इज गिवन ह्यूमन लाइक क्वालिटी बाय सेइंग, बाय पुटिंग एन एडजेक्टिव वेरी इन विद इट. Then number 20, light half believers of our casual creeds is an example of alliteration, irony, oxymoron or simile. Light half believers of our casual creeds, this is a phrase in the poem The Scholar Gypsy. तो ये example है alliteration की. Light, the sound of L, believers, casual. Then casual creeds, the sound of ka here with casual creeds. So this is an example of, or the literary device which is used here is alliteration. Now, number 21, the scholar Gypsy himself is a historical character, mythical symbol, political leader, or real Gypsy. So, the correct option is mythical symbol. ये एक myth है, scholar Gypsy. Then, number 22, spark from heaven is an example of biblical allusion, metaphor, symbol, and both B and C. So, correct option is D. Spark from heaven can be a metaphor, because it compares spiritual inspiration to a small spark of fire. कि एक छोटा सा चिंगारी है ये, ठीक है, spark from heaven. So it compares spiritual inspiration to a small spark of fire. So it can be metaphor, it can be a symbol. Definitely it symbolizes divine inspiration, it symbolizes inner purity, it also symbolizes spiritual faith. So it can be metaphor and symbol both at the same time. Number 23, the tone of the poem is mostly humorous. बिल्कुल भी humorous नहीं हो सकती ये, satirical भी नहीं है, melancholic and meditative or violent. So the correct option is very clear that the tone of the scholar Gypsy is melancholic and meditative. यानी बहुत उदास सा और बहुत ही thoughtful सी इसकी tone है. Number 25, the river in the poem symbolizes death, flow of time, wealth और war. River Thames का जिक्र बार बार आया हुआ है, तो river Thames जो है it symbolizes flow of time. Number 26, Arnold calls modern men strong believers, light half believers, atheists or warriors. Definitely modern man, he mourns that the modern man is half believer. Correct option is B, the light half believers. Number 27, the scholar Gypsy achieves immortality. Why? Because he drinks magic potion? No. He avoids the modern disease? Yes, definitely. He is not the part of the modern society. Instead, he escapes from the modernization and lives a life of spiritual spark or internal, divine inspiration. He becomes king. He writes books. No, he avoids the modern disease. 28, the poem reflects Arnold's concept of art for art's sake, culture and anarchy, sweetness and light, objective correlative. So the correct option is sweetness and light.
The poem can be considered elegiac because क्यों यानी elegy क्यों है, which elegy is it means the poem which is written on the death of some dear one. So it mourns a dead person? No. It laments the loss of faith and unity? Yes. Then it describes a funeral? Not at all. It praises war? Never. But it laments the loss of faith and unity. So answer B is correct. Now, number 30. The Scholar Gypsy by Mathew Arnold mainly employs which literary tradition? This is very important. You must know that it is not an epic, it is not metaphysical, it is not gothic, it is definitely pastoral tradition, because it describes the pastoral area uh, around or surrounding the Oxford University. So it employs the literary tradition which is called pastoral tradition. I hope this video is helpful to you and it has cleared most of the concepts which are given in the poem The Scholar Gypsy. I hope you would press like button and you will share it with your friends and you will subscribe it if you have not subscribed before. I thank you all.